Okay, students, let's get started with today's past paper. We are doing O level physics, May June 2025, paper 4, variant 1. Let's get started with it. A student investigates the resistance of a lamp. अच्छा जी एक स्टूडेंट है जो resistance of a lamp को investigate कर रहा है. Okay. Figure 1.1 shows the circuit used. Okay, so we have the circuit. Okay. The student closes the switch and measures the reading of current IL and potential difference VL as shown in figure 1.2. Record the reading shown. Okay, now you basically have to record these readings. First of all, can you realize if I zoom in here, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे zoom in कर रहा हूँ, current is lying exactly in the middle. That is 0.3 amperes. Current आ गया 0.3 ampere. Your voltage is somewhere here. That is 2.8 volts. Sir, how did you calculate this? Very simple trick. Very simple trick to calculate any form of reading. बेटा कोई भी रीडिंग आपने निकालनी है ये सिंपल सी ट्रिक अप्लाई करनी है. क्या ट्रिक अप्लाई करनी है? लेट मी शो यू. फर्स्ट ऑफ ऑल you will see this is 0.2, this is 0.4. The difference between these two values is of what? 0.2. 0.2 का difference है between these two values. Lines कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो 10 lines हैं between 0.2 and 0.4, and how many units are we covering? 0.2. One line will represent how many units? 0.02. Now erase all the lines. Okay, let's start from 0.2. This is 0.22, 0.24, 0.26, 0.28 and 0.3 is your answer. Also, beta, agar थोड़ी सी IQ अच्छी है, you can see that this point is lying exactly in between 0.2 and 0.4. That will be 0.3. Do the same thing here. You are going from 2 to 3. And how many lines are being covered? बेटा 2 से 3 जा रहे हो और कितनी लाइंस हैं बीच में? 2 से 3 जा रहे हो. You are covering 1 volts. How many lines in between? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lines equals to what? 1 volt. 1 line कितने वोल्ट के इक्वल होगी? 1 line is equals to 0.2 volts. So this is equals to 2.8. Simple. Let's further move ahead. Okay. Now the student opens the switch, suggests why the switch is opened after the readings are recorded. बेटा रीडिंग्स रिकॉर्ड करने के बाद स्विच क्यों ओपन कर दिया जाता है? So that the circuit doesn't get overheated or the wires don't get overheated. बेटा circuit overheat ना हो जाए या wires overheat ना हो जाए. That's why the switch is opened as soon as the readings are taken. So you can write here to prevent the circuit slash wires from getting overheated. Overheated. Simple. Nothing complicated here. आगे बढ़ते हैं. Let's further move ahead. Use the equation R is equals to VI to calculate resistance of the lamp. Give your answer to two significant figures. Resistance किसके equal है? Voltage over current. बेटा what was the voltage here? Voltage क्या था? 2.8. Okay. What was the current? 0.3. Can I calculate the resistance? Resistance निकाल सकते हो. 2.8 divided by 0.3. That is roughly equals to 9.3333 ohms. But you have to give your answer to two significant figures. अगर अपना आंसर आपने two significant figures तक देना, you will only write 9.3 ohms. Final answer. Let's further move ahead. The student rearranged the circuit and connects a 10 ohm resistor, okay, in series with the lamp, okay. Connect the voltmeter to measure the potential difference across the resistor and the lamp combination. In the space below, draw the new circuit with the resistor added. Okay, you have to draw the new circuit with the resistor added.
So you are connecting a lamp in series. Sorry, you are connecting a resistor in series with the lamp. इस तरह से. How will your new circuit look like? New circuit किस तरह का लिखेगा? चलो, let's draw it. This is the positive terminal. This is the negative terminal. Let's say you have a switch like this. ठीक है. Then what do you have? You have a 10 ohm resistor. Then you have a lamp like this. Okay. And then this lamp is further connected to an ammeter and like this. Simple. ठीक है. और बेटा आपने एक और बात क्या याद रखनी है? You are connecting a voltmeter across this entire combination. So let's apply that as well. Voltmeter across this entire combination is the one on one after mid. Okay, let's further move ahead. The reading on the voltmeter does not change. अच्छा voltmeter पे जो reading है it does not change. Okay. Figure 1.3 shows the new current reading on the ammeter. This is current IC. Record IC. अच्छा जी IC की वैल्यू क्या है? Let's say this is 0.1, this is 0.12, this is 0.14, this is 0.16, this is 0.18. The new current value is 0.18 ampere. Use the equation in A part 3 to find the resistance of the lamp and the resistor connected in series. How will we do that? Resistance is equals to voltage over current. वोल्टेज क्या आ रहा था बेटा फर्स्ट पार्ट में? डू यू रिमेम्बर फर्स्ट पार्ट में हमने जो वोल्टेज निकाला था दैट वाज इक्वल्स टू व्हाट? 2.8. Here you have it. Okay. 2.8 divided by the current that is 0.18 divided by 0.18. What does your resistance comes out to be? 2.8 divided by 0.18. This comes out to be 15.6 ohms. Okay. Let's further move ahead. Theory states that the resistance of RL in the new circuit is given by this. Calculate the resistance RL of the lamp. Okay, easy. RL is equals to RC minus 10. What was RC? Beta RC क्या निकल के आया था? 15.6. 15.6 minus 10. This comes out to be 5.6 ohms as your answer. Easy peasy lemon squeezy. कोई ज़्यादा इसमें हेक्टिक बात नहीं है. Let's see the last part of this question. क्या लिखा हुआ है? Okay. State how the brightness of the lamp changes in the new circuit. Okay. How the brightness of the lamp changes in the new circuit compared to the circuit shown in figure 1.1 and explain why. बेटा brightness किस तरह change होगी in the new circuit and you have to explain why. Can you realize that the total resistance of the new circuit has increased? क्यों? क्योंकि you have added this 10 ohm resistor. बेटा अगर आप देखो तो इनिशियल सर्किट में सिर्फ एक लैम्प था. नो 10 ohm resistor was present. आपने अगर सीरीज में 10 ohm resistor प्लेस किया है, what is this doing? This is causing the total resistance to increase. The total resistance of the circuit increases, hence the total current of the circuit decreases. If the total current of the circuit decreases, the lamp will become dimmer. Simple. You can write it here. You can say as the total resistance of circuit increases, the total current in circuit decreases, and as the total current in circuit decreases क्या होगा? The lamp becomes dimmer. और यहाँ पे you can further write what will happen to the brightness of the lamp. It decreases. Nothing complicated. आगे बढ़ते हैं. Let's further move ahead. आगे बढ़ते हैं. Okay, now this is a very interesting question. I have already drawn this for you guys. Just focus on the board.
A student investigates the light reflected from a plane mirror. Okay. Figure 2.1 show the straight line AB. Okay, so you have a straight line AB. Yeah, आपकी straight line AB. Okay. Draw a line from point A at an angle of 30 degree in an anti-clockwise direction from AB. अच्छा जी, बेटा आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री के एंगल पे एक लाइन बनानी है ए सी. यू हैव ड्रॉन दैट. ये वाली लाइन ए सी आपने बना ली. ओके. यू हैव टू मेक श्योर दैट द लाइन इज मोर देन 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. ओके. लेबल दिस लाइन सी. ओके. Mark a point D on the line AB. Okay. 4 centimeters from point A. Okay. Now you have to mark a point D 4 centimeters from point A. ये आपने point D मार्क कर दिया 4 centimeter from point A. ये आ गया आपका point D. Okay. Now what else? Draw a line perpendicular to AB through D. हमने ये कर दिया perpendicular to AB through D. We have made a line like this. Okay. The line must also pass through the line AC that you have drawn in A part 1. Label the point with E, the point where D crosses AC. अच्छा, जहाँ पे ये blue और pink line intersect कर रही है, that is known as your line. That is known as your point E. ये भी हमने mark कर दिया. This is known as your point E. Simple. Okay, the student places a mirror along the line AC with the reflection facing towards point B. अच्छा जी, स्टूडेंट क्या कर रहा है यहाँ पे AC पे एक मिरर प्लेस कर रहा है. ओके, नो प्रॉब्लम्स इन दैट. ये इस हाइलाइटेड लाइन पे एक मिरर प्लेस कर रहा है. व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? Arranges an illuminated slit so that the ray of light passes through line DE. अच्छा जी, रे ऑफ लाइट क्या कर रही है? passes through line DE. ओके. अब ये है आपकी ray of light. This DE is your ray of light. Okay. यही लिखा हुआ है. Okay. The ray reflects from the mirror. Draw a normal to line AC at point E. अच्छा जी, पॉइंट ई पे आपने नॉर्मल बनाना है. हाउ विल यू ड्रॉ अ नॉर्मल? इस तरह आ गई 90 डिग्री की लाइन. सिंपल. What else? Label the angle between point DE and the normal you have drawn as theta. Measure and record theta. तो बेटा लाइन डी ई और नॉर्मल के बीच में आपने एंगल लेबल कर देना है थीटा. दिस थीटा कम्स आउट टू बी, this theta comes out to be, I have already measured that, this theta comes out to be 30 degrees. अब आप कहोगे सर थीटा मेजर किस तरह करना है? हाउ शुड आई प्लेस माई प्रोटेक्टर? बहुत 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 इजी है. हाउ शुड यू प्लेस योर प्रोटेक्टर? यू शुड प्लेस द मिडल ऑफ द प्रोटेक्टर हेयर. इस तरह से नॉर्मल पे आपने प्रोटेक्टर रखना है. एंड यू हैव टू मेजर दिस एंगल. ये वाली लाइन क्या एंगल बना रही है? मे बी 30 डिग्री. सिंपल. So you will get your answer as 30 डिग्री. ठीक है, प्रोटेक्टर रखना भी समझा दिया. बच्चों की तरह चीजें कर दी हैं लिटरली. चलो आगे बढ़ते हैं. You can write here this is 30 degrees. Okay. The student marks 2 points P1 and P2 on the reflected line. Okay, reflected line पे आप 2 points mark कर रहे हो, P1 and P2. Removes the mirror. Okay. And draws the reflected line through points P1 and P2. Okay. Describe how P1 and P2 are chosen to give an accurate value of the reflected line as possible. अच्छा, देखो सवाल क्या पूछो. सवाल हमसे पूछ रहा है हाउ कैन वी चूज पॉइंट P1 एंड P2 टू गिव एन एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइन. अच्छा देखो P1 P2 है क्या बेटा? बेटा देखो P1 P2 है क्या? आ जाओ यहाँ पे ऊपर आ जाओ. P1 P2 इज समवेयर हेयर. यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे पे यहाँ पे आपने कहीं ना कहीं P1 और P2 मार्क करना. ठीक है. तो व्हाट प्रिकॉशन कैन वी टेक to mark P1 and P2 as accurately as possible और reflected ray as accurately as possible हमसे बन जाए. तो बेटा आप ये काम कर सकते हो कि P1 and P2 को थोड़ा थोड़ा दूर मार्क करो. मेक श्योर P1 and P2 आर फार अवे. इस तरह से P1 and P2 आर फार अवे. P1 and P2 फार अवे होंगे तो क्या होगा? आपकी लाइन एक्यूरेट बनेगी. ठीक है.
You can say make sure P1 and P2 points are made far apart. या इस तरह कह सकते हो make sure P1 and P2 are not close together. Are not close together. Simple. Let's further move ahead. आगे बढ़ते हैं. The student repeats the procedure with a ray of light striking the mirror at a different angle. Okay. Figure 2.2 shows the second line labeled A prime B prime. On figure 2.2, draw a line from point A prime at an angle of 60 degree in an anti-clockwise direction from line A prime B prime. The line should be more than 10 centimeter long. Label this line with C prime. Okay, so again यहाँ पे डायग्राम वाला काम है to avoid wasting time. मैंने already सारी डायग्राम्स बना दी. First of all, you have to make a line at a 60 degree anti-clockwise एंगल और इसका हमने नाम क्या रखना है सी प्राइम. ये एंड पे हमने लिख दिया सी प्राइम. ओके आगे देखते हैं क्या करना है. मार्क अ पॉइंट डी ऑन द लाइन ए प्राइम एंड बी प्राइम 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए. अच्छा जी 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए आपने डी प्राइम मार्क कर दिया. ओके. ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए प्राइम बी प्राइम थ्रू पॉइंट डी वन. ओके ये लाइन परपेंडिकुलर हमने बना दी. सिंपल. ओके. The point where this line passes through A prime C prime is labeled with E prime. ये भी कर दिया. बेटा ये लाइन जहाँ पे A प्राइम C प्राइम से पास कर रही है that is known as E प्राइम. सिंपल. आगे बढ़ते हैं. ड्रॉ अ नॉर्मल एज वेल. हमने नॉर्मल भी बना लिया यहाँ पे. लेट्स लेबल दिस एज द नॉर्मल. चलो आगे बढ़ते हैं. Label the angle between D prime and E prime and the normal you have drawn with an alpha. चलिए इसको हमने एक अल्फा से रिप्रेजेंट कर देना है. मैंने तो मेजर करके लिखा हुआ था सॉरी फॉर दैट बट हमने पहले इसे अल्फा से रिप्रेजेंट कर देना. ओके. लेट्स फर्दर मूव अहेड. क्या लिखा हुआ है आगे. Explain one practical precaution that you can take to ensure that the normal is accurately drawn. बेटा नॉर्मल को एक्यूरेटली ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे. what will you do to draw the normal accurately as possible. First of all, to use a sharp pencil. Second of all, avoid parallax error. तो ये दोनों लिखो. use a sharp pencil. Second of all बेटा क्या कर सकते हो. avoid parallax error. Easy peasy lemon squeezy. ओके. मेजर एंड रिकॉर्ड द एंगल अल्फा. अच्छा जी एंगल अल्फा मेजर करना है. कैसे करेंगे बच्चे. एंगल अल्फा कैसे मेजर करेंगे बेटा. यहाँ पे लाए प्रोटेक्टर का मिडिल. ये रख दिया प्रोटेक्टर. मेजर कर लिया अल्फा. अल्फा कम्स आउट टू बी 60 डिग्री. आई हैव ऑलरेडी डन दैट. आई हैव ऑलरेडी मेजर्ड अल्फा फॉर यू गाइस ताकि इतना ज्यादा टाइम ना लगे. ओके. Theory suggests that alpha is equal to 2 theta. State whether your result supports this theory. Yeah, that's correct. Alpha क्या है 60. Theta क्या है 30. Yeah, so that's almost same. 60 degree is equal to 60 degree. Yeah, that's correct. State whether your result supports this theory. Yes. Give a reason for their answer. भाई क्या आपकी जो कैलकुलेशन है वो थ्योरी को सपोर्ट करिए. यस बिकॉज द वैल्यूज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. यस because the values are very close to each other. Very close to each other. Simple. Nothing complicated. आगे बढ़ते हैं जी. Let's move ahead. अच्छा थोड़ा सा zoom out करना पड़ेगा I guess because we cannot read this. अच्छा जी let's see. A student investigates the time taken. अच्छा जी a student investigates the time taken. Student investigates the time taken for water to flow through a small hole in the bottom of a can. Okay. The apparatus is arranged as shown in figure 3.1. ठीक है ये apparatus arrange किया हुआ है हमने. Okay. This is a 100 centimeter measuring cylinder. ये funnel है.
ये स्मॉल कैन है, यहाँ पे स्मॉल कैन में होल हुआ है, दिस इज अ 50 cm cube measuring cylinder. Okay. The student uses the 100 cm cube measuring cylinder to measure a volume of 70 cm cube of water. Places a finger under the hole at the bottom of the can. कहाँ पे प्लेस कर रहा है फिंगर? यहाँ पे. Okay. And pours the water into the can from the measuring cylinder. Okay. He removes the finger and at the same time starts the stopwatch. Okay, remove करता है finger को and starts the stopwatch. Records the time T1 when the volume of the water collected in the measuring cylinder is 30 cm cube. अच्छा जी, जब मेजरिंग सिलेंडर में वाटर 30 cm क्यूब हो जाता है तो आप टाइम मेजर कर लेते हो. ओके. तो स्टॉप वॉच. ठीक है, ये आपका टाइम आ गया. व्हाट इज दिस टाइम इक्वल टू? 22.63 सेकेंड. अच्छा, अभी तक किसी को अगर एक्सपेरिमेंट समझ नहीं आया तो ये हो रहा है. बेसिकली यू हैव फिल्ड दिस मेजरिंग सिलेंडर टिल 70 cm क्यूब, और 70 cm क्यूब से फिल करने के बाद आप इसको कैन में डाल रहे हो और कैन पे आपने फिंगर रखी हुई है यहाँ पे. वंस यू रिमूव द फिंगर यू स्टार्ट द स्टॉप वॉच. जैसे ही ये वाला मेजरिंग सिलेंडर 30 cm क्यूब भर जाता है यू स्टॉप द स्टॉप वॉच. सिंपल. ओके, लेट्स सी दिस. The student repeats A part 1 and records the time T2 shown in figure 3.3. Okay. ये आपका आ गया टाइम T2. This is 21.84. You have to calculate the average time correct to 0.1 seconds. किस तरह निकालोगे average time? हाँ जी. How will you calculate average time? 21.84 plus. What is the second value? 22.63. 22.63 divided by 2. What is your average time? बेटा average time क्या आ रहा है? निकालो जरा. 21.84 plus 22.63 divided by 2. Average time comes out to be what? 22.235 seconds. But you have to give your answer nearest to 0.1 seconds. 22.2 seconds is your answer. इसको लिख देते हैं. 22.2 seconds is your average time. Okay. The average rate of flow is given by this. Calculate R and give the unit for your answer. Rate of flow क्या है? 30 divided by average time क्या है? 22.2. निकाल लो जरा आंसर क्या आता है. 30 divided by आंसर क्या आ गया? 1.35 cm cube per second. ये आ गया आपका रेट ऑफ फ्लो. ओके, आगे बढ़ते हैं. The student repeats part I1 and I2 for values between 100 cm cube, 90 cm cube, 80 cm cube, 60 cm cube, and 50 cm cube. Okay. The volume of water collected in the measuring cylinder is 30 cm cube for each value of V. Okay. The readings are shown in table 3.1. अच्छा जी, ये table 3.1 में आपके पास रीडिंग आ गई. Complete the headings. अच्छा जी, आपने headings complete करनी है with what? Units in the top row of the table. Add your add your readings in A part 1 and A part 2. Okay. Calculate the average time for each reading. Okay. तो वॉल्यूम फर्स्ट ऑफ ऑल किसके यूनिट्स में मेजर हो रहा है? सीएम क्यूब. ओके. दिस इज व्हाट टाइम T1 measured in seconds. This is time T2 measured in seconds. This is time average also measured in seconds. अच्छा, 70 cm क्यूब था तो आपका टाइम T1 क्या था? Correct to one decimal place, 22.6. Okay. This is 22.6. What was your time T2? 21.8. तो आपका जो फाइनल एवरेज टाइम आ रहा था दैट वाज 22.2. ओके. ओके, ठीक है. तो ये आप लिख सकते हो यहाँ पे इजीली. नथिंग कॉम्प्लिकेटेड हियर. ठीक है. अच्छा, नाउ 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 लेट्स फिर सी क्या हो सकता है यहाँ पे. ठीक है. नाउ you can take the average time of every T1 and T2. T1 और T2 का एवरेज टाइम निकालो. 16 plus 16.2 divided by 2. This comes out to be 16.1. इस तरह पूरा का पूरा टेबल फिल कर दो. 16.9 plus 17.4 divided by 2. ये क्या आंसर आता है जरा देखें. 16.9 plus 17.4 divided by 2. This comes out to be 17.2 again. Okay.
अच्छा, एक्चुअली आंसर जो आ रहा है ना वो 17.15 आ रहा है, बट हेयर आई एम अप्लाइंग अ सिंपल ट्रिक, काइंडली नोट ऑन द बोर्ड। बेटा यहाँ पे जो आपका आंसर आ रहा है वो 17.15 सेकेंड आ रहा है, बट मैं जब आंसर लिखूंगा वो 17.2 लिखूंगा। वाई? जब मैं आंसर लिखूंगा 17.2 लिखूंगा। वाई? बिकॉज आई हैव टू राइट ऑल द आंसर्स करेक्ट टू 0.1 centimeters, because that's what the table is following। ठीक है, आपने सारे के सारे आंसर 0.1 सेंटीमीटर तक लिखने हैं, तो आप इस आंसर को राउंड ऑफ कर दोगे 17.2 से। सेकंड वाला भी कर लो, 18.9, बल्कि थर्ड वाला 18.9 प्लस 19.7 डिवाइडेड बाई 2, दिस कम्स आउट टू बी 19.3। फर्दर डू दिस, 25.3 plus 25.9 divided by 2, this comes out to be 25.6। okay, आगे कर लो, 31.1 plus 31.3 divided by 2, that comes out to be 31.2 seconds। simple, nothing complicated here। अच्छा जी, क्या लिखा हुआ है आगे? On the grid provided in figure 3.4, plot a graph of T average on the y-axis and V on the x-axis। You do not need to start your axis at 0, 0। Draw the curve of best fit। अच्छा जी, अब हमें बता दिया कि आपको जरूरी नहीं है कि आप अपना ग्राफ जो है वो 0, 0 से स्टार्ट करो। एंड व्हाट डू यू हैव टू डू? You have to plot T average on the y-axis। Okay, so let's do that। T average will be plotted here slash seconds, and x-axis पे क्या plot करना है? V। x-axis पे you have to plot the voltage V, sorry, not voltage V, volume cm cube। My bad, what am I thinking here? On the x-axis you have to plot the volume cm cube, and the y-axis पे आपने क्या plot करना है? Time average slash seconds। Okay, अब बेटा थोड़ा सा गौर करो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस को देख लें, चलो एक्स एक्सिस को देख लेते हैं। एक्स एक्सिस पे व्हाट इज योर मिनिमम रीडिंग? 50। एक्स एक्सिस पे व्हाट इज योर मैक्सिमम रीडिंग? 100। ओके, व्हाट आर द नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस ऑन एक्स एक्सिस? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस ऑन द एक्स एक्सिस इज 8। तो हम क्या कर सकते हैं? व्हाट कुड बी द स्केल ऑफ एक्स एक्सिस? बेटा स्केल निकालने के लिए क्या करते हैं? यू टेक द मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ बॉक्सेस। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 100। मिनिमम वैल्यू क्या है बेटा? 50। नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस क्या थे? 8। कैलकुलेट करो, स्केल क्या आ रही है? 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 8, scale comes out to be 6.25। That means you must plot every box, every large box। इसका मतलब ये है कि x axis पे हर large box must represent 6.25 unit, but that's a very awkward scale। That's a very very awkward scale। हमेशा क्या बात याद रखनी है बेटा? हमेशा ये बात याद रखनी है कि आपने स्केल जो है वो आइदर 1, 2, 5 या फिर 10 के मल्टीपल्स में प्लॉट करना है। हमेशा आपने क्या बात याद रखनी है कि जो आपका स्केल है वो 1, 2, 5 एंड 10 के मल्टीपल्स में प्लॉट होगा। सो लेट स्टार्ट फ्रॉम 40, दिस इज 50, दिस इज 60, दिस इज 70, दिस इज 80, दिस इज 90, ये आ गया आपका 100 बेटा, ये आ गया 110, ये आ गया 120। अब सेम चीज कर लो बेटे फॉर द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे यू हैव टू प्लॉट एवरेज टाइम। व्हाट इज द मिनिमम रीडिंग? 16.1। ये आ गई आपकी मैक्सिमम रीडिंग। अब वापस कर रहा हूँ वही स्केल वाला काम, गौर से देखना बच्चों। अच्छा जी, नाउ कहाँ पे करें इसको हम? इसको मिटा दें। लेट्स इरेज दिस। अच्छा जी, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द स्केल ऑन द वाई एक्सिस। अच्छा जी, किस तरह करेंगे सर?
स्केल ऑन द वाई एक्सेस निकालने के लिए व्हाट यू विल डू, स्केल ऑफ वाई एक्सेस निकालने के लिए आप क्या करोगे, maximum value minus minimum value divided by number of large boxes, divided by number of large boxes। बेटा मैक्सिमम वैल्यू क्या है 31.2, मिनिमम वैल्यू क्या है 16.1, नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस क्या है, नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा जी, लार्ज बॉक्सेस वाई एक्सेस पे कितने 11, यहाँ पे आप डिवाइड कर दो 11 से। लेट्स सी क्या आंसर आता है, 11 से डिवाइड करो। 31.2 minus 16.1 divided by 11, this gives you a value of 1.37, जो कि अगर आप राउंड ऑफ करोगे that comes out to be 2, if you round it off that comes out to be 2, because 1.37 तो आप नहीं प्लॉट कर सकते ना, because that's an awkward scale, either you plot in the multiples of 1 2 5 or 10। हमने 2 ले लिया because that's the most closest option। ओके सो यहाँ पे आ जाओ, यू कैन स्टार्ट योर वाई एक्सिस का स्केल फ्रॉम लेट से 16, वाई एक्सिस का स्केल आपने 16 से स्टार्ट किया, फिर हो गया 18। ओके लेट्स इरेज ऑल ऑफ दिस, लेट्स इरेज ऑल ऑफ दिस, ये भी इरेज करो एंड ये वाली सारी चीजें भी इरेज करो। ठीक है, तो 16 आ गया, 18 आ गया, देन यू हैव 20, then you have 22, then you have 24 बच्चे, then you have 26, then you have 28, then you have 30, 30 आ गया आपके पास, 32 and 32, 34 and 36 and 38। Okay, now the last part, just plot out the points, सिर्फ पॉइंट्स प्लॉट करते जाओ। लेट मी स्पीड रन थ्रू दैट। ठीक है, एक्स एक्सिस में 100, वाई एक्सिस में 16.1। लेट मी स्पीड रन थ्रू दैट। Okay, so I have plotted every point। Now what I have to do, I have to draw a curve of best fit। ठीक है, curve of best fit बनाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है you have to draw a curve of best fit। Let's draw a curve of best fit। Let's utilize my drawing ability to the maximum possible। लेट्स ड्रॉ इट, कर्व और बेस्ट फिट ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, बट आई होप अब तक सबको चैनल पे पता होगा दैट माय ड्राइंग एबिलिटी इज वेरी वेरी बैड। This is your curve of best fit। Okay, you can draw a much better curve than me passing through all the points। Now let's zoom in। Suggest y time t1 and t2 for the values of v below 50 cm cube are not measured। Okay, why? Can you realize as the volume is decreasing, time is increasing? तो हो सकता है कि if you take a volume below 50 cm cube, the time gets too large। So that's not done here। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हो कि the time value gets too large, time value gets too large, or it takes too long to perform the experiment। On your graph sketch line, you would expect to see if the small hole in the can is made slightly bigger। बेटा अगर आप होल को बिगर कर देते हो तो क्या होगा, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ वी, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ वी आपका एवरेज टाइम कम हो जाएगा। ओके लेट्स सी, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ वी आपका एवरेज टाइम कम हो जाएगा। हाउ विल योर ग्राफ लुक लाइक, योर ग्राफ विल शिफ्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट लाइक दिस। इस तरह से ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, यू कैन ड्रॉ इट फर्दर एज वेल। इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। योर ग्राफ विल शिफ्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट लाइक दिस। ये आ गया, ग्राफ शिफ्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट, सिंपल। आगे बढ़ते हैं जी, लेट्स सी नेक्स्ट सवाल क्या है। सो दिस इज योर क्वेश्चन फॉर प्लानिंग एंड डिजाइनिंग का एक्सपेरिमेंट। व्हेन अ टेबल टेनिस बॉल ओके is dropped as shown in figure 4.1, it will bounce back upwards। Okay,
Some of the initial gravitational potential energy of the ball is lost in the bounce. Okay, 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 okay. Plan an experiment to investigate how the height from which the ball is dropped affects the percentage of gravitational potential energy lost in each bounce. You may use any apparatus commonly found in a laboratory. In addition, for the apparatus shown in figure 4.1, gravitational potential energy is given by this formula, okay, where m is the mass of the ball, g is the gravitational field strength, h is the height above the bench for which the ball is dropped. In your plan, what do you have to include? State what will you measure, dependent variable, independent variables, and any additional apparatus that you need. State any key variables to keep constant, okay. Explain how will you ensure that the results are as accurate as possible. Draw a table. Explain how will you use the results to draw a conclusion. Okay. First of all, how will I measure the independent and dependent variables? Okay. First of all, what is the independent variable here? Independent variables are those variables which you can vary. What is something that you can vary here? You can vary what? The height from which the ball is dropped. ठीक है. Independent variable बेटा क्या हो गया? What is your independent variable? Can you calculate? Independent variable क्या हो गया? Can you identify? The height from which ball ball is dropped. ये हो गया आपका independent variable. Dependent क्या हो जाएगा बेटा? Dependent क्या हो जाएगा? Rebound height. कितनी हाइट पे जो है वो बॉल हिट करके वापस आती है, दैट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल. ओके. हाउ विल यू मेजर बोथ ऑफ देम? हाँ जी, हाउ विल यू मेजर बोथ ऑफ देम? यूजिंग द वर्टिकल मीटर रूल. ठीक है, यूजिंग द वर्टिकल मीटर रूल. ठीक है. तो यहां पे आप एक काम करो, लिख दो यहां पे. यू कैन से द हाइट फ्रॉम विच the ball is dropped, from which the ball is dropped, and the rebound height, and the rebound height is measured using what? Using the vertical meter rule. Using the vertical meter rule. Okay. What else can you say here? बेटा क्या आपको कोई एडिशनल वेरिएबल मेजर करना है? डू यू वांट टू मेजर एनी एडिशनल वेरिएबल? यस, मास. हाउ कैन यू मेजर मास? मास कैन बी मेजर्ड यूजिंग a top pan balance. Mass can be measured using a top pan balance. लिख लो यहाँ पे. Mass of the ball can be measured using top pan balance. Using top pan balance. What else can you write here? You can say beta कि perform the experiment for different values of height. Simple. Yeah, repeat the experiment for different values of height, whatever you want to write here. Lastly तो नहीं कहेंगे. You can see here, you also have to state some variables that must be kept constant. क्या क्या चीजें constant रखनी चाहिए? Mass of the ball. Mass of the ball should be kept constant. The material of the ball should also be kept constant. अच्छा ये लिख लो. Mass of the ball and the material of the ball should be kept constant. And the material of ball should be kept constant.
should be kept constant. Now how will you draw a table? Table बनाना भी easy है, थोड़ा सा इसका कह सकते हो difficult है. What will you say? Height dropped. ये जिस हाइट से आपने ड्रॉप किया है इसको हम कह देते हैं स्लैश मीटर्स. देन यू कैन से ओके लेट मी डू अ थिंग. एक काम करते हैं हम. Let's draw an actual table. Yeah, that's good. बल्कि that is also not good because width इसकी मैंने काफी ज्यादा रख दी है. Let's make something along these lines. Yeah. Okay. So now once this is made, इसमें फर्स्ट कॉलम में क्या लिख दोगे? यू विल से ड्रॉप हाइट. किस हाइट से आपने ड्रॉप किया है? दिस इज मेजर्ड इन मीटर्स. सेकंड क्या कर दोगे? रीबाउंड हाइट. रीबाउंड हाइट विल आल्सो बी मेजर्ड इन मीटर्स. बेटा थर्ड कॉलम में क्या कर दोगे? हाँ जी, यू विल से इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. फोर्थ कॉलम में क्या कर दोगे? फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. एंड लास्ट कॉलम में क्या कर दोगे बेटा? परसेंटेज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज लॉस्ट. यू कैन राइट हियर परसेंटेज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट. अब क्या करेंगे? व्हाट विल वी फर्दर डू? लास्टली आपने कंक्लूजन बताना है. किस तरह निकालोगे? हाउ विल यू ड्रॉ अ कंक्लूजन? You can say plot a graph of drop height versus percentage of gravitational potential energy lost. ठीक है, आप लास्ट में कंक्लूजन में क्या करोगे? यू विल से प्लॉट अ ग्राफ ऑफ परसेंटेज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट अगेंस्ट द ड्रॉप हाइट. लिख दो प्लॉट अ ओके प्लॉट अ ग्राफ ऑफ ड्रॉप हाइट against the percentage of gravitational potential energy lost. Simple. This marks the end of this paper. If you have any questions, बच्चों कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हो without any hesitation in the comment section.